Assalamu alaikum and welcome back. This is your course Operation Strategy and I'm your instructor Dr. Anil Salman, and we have been together for the past 22 lectures. This is 23rd one. Today we are going to talk about improvement, how we can bring improvement in processes. But before that, let me just talk about this के हमने last lecture में किया क्या था, recap क्या है हमारा. So let's see. Lecture number 22 was basically more or less about technology, that how technology is helping in terms of development. Technology का क्या role है, what kinds of technology के levels क्या हैं, like एक आपकी national level पे होती है, एक provincial level पे होती है, और एक बिल्कुल local level पे होती है, एक organization level पे होती है. Technology को apply कैसे किया जाता है, adapt कैसे किया जाता है. फिर we also looked at कि टेक्नोलॉजी की जनरेशन कैसे होती है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट. कि जी yesterday I was in one of the meeting में था, तो I was being told, not rather told, but it was being shared that कि जी we talk about this phenomena of globalization, and इसमें जो सबसे ज़्यादा जो important role है that is technology. अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो हमारी जिस स्पीड के साथ ग्लोबलाइजेशन इस वक्त हुई है, जिस तरीके से हमारे बिजनेसेस चेंज हुए हैं, ये होने नहीं थे. एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट. If you see that now, if you have a cell phone, you can do all your online transactions, you can call anywhere, you can browse anywhere, 3G, 4G, like the world is in your palm. ठीक है. और इसने businesses को इतना easy कर दिया, इतना convenient कर दिया है that now people think कि anything is possible. Earlier we would say कि जी जब तक हमारे पास पैसे नहीं होते, जब तक हमारे पास एक formal business address नहीं होता, we cannot do businesses. लेकिन अब आपके operations ऐसे हैं that we are actually having these virtual buildings. Virtual buildings means कि आपका एक website का एक Facebook का page है, आपने अपना business start किया, वहाँ पर घर के address से like you can start doing your business, and they are mashallah running very well. So it's because of technology. Technology ने क्या किया है, it has actually increased the market opportunities. Markets हमारी बड़ी करती हैं, जहाँ पे हम कहते हैं world has become a village, कि दुनिया छोटी होगी लेकिन markets हमारी बहुत बड़ी हो गई हैं. Then technology की generation different types से होती है. If you recall the last lecture, और उसके बाद फिर हमने technology की evolution में देखा था S curve, कि किस तरीके से पहले awareness आ रही होती है, then people start knowing about this technology, फिर maturity भी जाती है, फिर उसका downfall आ जाता है. जब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी की डाउनफॉल आती है, वैसी नई टेक्नोलॉजी आपकी आ जाती है. यही वो शू मार्कर का जो कॉन्सेप्ट है, दैट वाज द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. कि जी जब शुम्पेटर का था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट, कि जब आपकी नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ टेक्नोलॉजी को वो मार देती है. लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से द वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व्ड, उसमें वी टॉक्ड अबाउट ये जो है टेक्नोलॉजी का जो रोल है ऑन इन दैट एस्पेक्ट. वी टॉक्ड अबाउट कि डैन टैप्सकॉट क्या कहता है टेक्नोलॉजी के बारे में. एंड द मोर वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, द मोर वी लर्न कि जी कि डैन टैप्सकॉट टॉक अबाउट द 4 views of world, and in 4 views he is talking about that why technology has evolved, how it has evolved, and how it has actually brought changes in the world. So therefore, if we, that is basically a recap of lecture number 22. Now we go on to कि कौन सा आपके models हैं, और इन models में we are going to talk about कि what are the models that actually improve your process. अब इन models के अंदर we have to see that कि आपके जो improvement है वो आपके process में कैसे आती है. ठीक है. इस process में जैसे जैसे आपकी improvement आएगी, वैसे वैसे हमारी efficiency increase करती है, वैसे वैसे हमारी productivity increase करती है, वैसे वैसे हमारा profit increase करता है. So improvement is a continuous process, और जैसे जैसे आपकी इम्प्रूवमेंट ने आना है, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा. इफ़ देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, इफ़ वी स्टे द वे वी आर, तो फिर क्या होता है दैट वी विल बी एक्चुअली स्टैग्नेंट, और ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी एक डायनामिक वर्ल्ड के अंदर स्टैग्नेंट नहीं रह सकती. सो देयरफॉर वी टॉक अबाउट कि किस तरह के मॉडल्स हैं जो कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट को ड्राइव करते हैं. So there are certain questions that I would like to ask. Now the first question is that where we are going. अब
When we started this course, we talked about कि जी आपकी जो है strategic application या आपकी जो strategic implication है वो ये है कि जी हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे जाना चाहते हैं. The planning is not that where we want to know where we are. Planning is basically कि हम कहाँ पे अपने आप को देखते हैं after 4 years, after 5 years. Now, what we are saying is that where we are going कि हम किस direction में head out कर रहे हैं. ठीक है. अब in order to know where you are going, you have to answer some of the questions, that is why you are going there. ठीक है. पहला है कि जी where, फिर दूसरा जाता है why, and then the third part comes how, और उसके बाद how के बाद then it comes that is there something better. ठीक है. Once we know about these questions, तो ये हमारी क्या करते हैं, हमारी strategy making को बहुत ज़्यादा easy कर देता है अगर आपको इन questions का answer पता है. Now, why? कि जी why के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जी if you have opened a business and if you are saying कि जी I'm in the food business, so you need to know why you are in the food business. Why not आपने मोबाइल की कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट कर ली, आपने एरिएटेड ड्रिंक्स की कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट कर ली, and why you haven't gone to some other form of business. So therefore, once we understand the question why, तो हमें ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि जी हमने अपनी स्ट्रैटेजी की फॉर्मुलेशन कैसे करनी है. Number 2 is how. Once you determine the question कि जी how का part आपको करने के लिए there is another part कि जी you need to have some niche, you need to have some credibility, you need to have some experience. So experience that is too common. ठीक है. A 2-year process improvement effort is completed. Quickly or slowly but steadily it begins to fade away. A year or so later there is little evidence anything was done. So जो improvement है, there are 2 concepts. एक होता है आपका dynamic improvement जो एकदम आपकी revolutionary आती है, and the second one is basically your improvement जो कि आपकी continuous होती है. ठीक है. Now both improvements are there. You can't say कि जी they work one at a time. दोनों simultaneously भी काम कर सकती हैं, दोनों ये क्या कहते हैं गैप्स में भी काम करती हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखें तो दोनों simultaneously काम कर रही होती हैं. Now what we are actually looking into is कि ये जो आपका चेंज आता है, जो इम्प्रूवमेंट आती है, आपने एक नई गाड़ी ली, दैट इज़ एन इम्प्रूवमेंट, लेकिन आफ्टर 10 years, 2 years, 8 years, इफ़ यू आर ऑन द सेम काइंड ऑफ कार यूजिंग द सेम थिंग्स, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं लेके आए, कोई उसकी पोशिश नहीं चेंज की, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो वो इम्प्रूवमेंट फिर इम्प्रूवमेंट नहीं रही. अब वो चेंज नहीं रहा. ठीक है. नाउ इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ दैट रूटीन. सो उसके अंदर चेंज लाना इज़ इम्पॉर्टेंट. And obviously whenever you buy a car, it doesn't remain the same the way it was. 0 meter nahi rehti. So what we are actually looking into is that once you have bought or once you have gotten into any business, once you have gotten into any जिसे कहते हैं venture, तो उसके अंदर आप same model नहीं रखते. आपको अपनी strategy change करनी पड़ेगी. आपको अपना modus operandi बदलना पड़ेगा. So therefore, experience that is too common. कि जब आप कहते हैं कि जी एक्सपीरियंस आपका चलता रहता है, अब हर आदमी के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन वो आपकी नीश कहाँ पे है. 2 years, 3 years, 4 years, 10 years. अब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आता रहता है वैसे वैसे भी फील कि जी ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर हो जाएंगी. बट for some people experience is that it's just a repetition of activities. आप 10 साल तक एक ही चीज़ करते जा रहे हैं. ठीक है. You might be very good in that thing, लेकिन आपकी एक्सटर्नल चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं. ठीक है. आपकी एक्सटर्नल आपकी जो है कंडीशनैलिटीज़ इतनी बदल गई हैं that now we are actually looking into how we can bring about or how we can actually adapt to these external changes. Some people who are experienced, they are very much fast learners. They can easily
वो जैसे कहते हैं इन प्रोसेसेस को, इन चीज़ों को वो कैचअप कर लेते हैं. सम पीपल आर वेरी रिजिड. वो कहते हैं जी तो व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे लर्निंग कर्व्स बने हम उनको चेंज नहीं करना चाहते. जो हम शुरू से एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं हम हमेशा वो स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे. एंड इन आवर एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव सीन कि जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस who have used the same old strategies and who have not changed so far, or who have been resilient to the external change, वो जल्दी fade out हो गई हैं. उसके अंदर आपका Kodak का example है, very classic example. That the company, वो जो if you remember Kodak की फिल्म थे, कैमरास थे, और वो 36 roll reel वाला होता था. In opposite to that Sony था, Panasonic था, उसके बाद Minolta, all these companies. लेकिन जब दुनिया सारी वो उस पे चली गई, आपके डिजिटल कैमरास की तरफ चली गई, Kodak never worked on it, and ultimately उसने स्ट्रैटेजी नहीं चेंज किया and it faded out. So therefore चेंज चाहे कैसा भी आए, लेकिन अगर वही चेंज persistent हो जाएगा तो फिर वो रूटीन बन जाएगा. We have to bring such changes. So the question comes, why do organizations most often do process improvement? ठीक है, अब हम दो चीज़ों से improvement लेके आ सकते हैं. एक आपके process के अंदर improvement होती है और एक आपके product के अंदर improvement होती है. Process improvement में हम क्या कर रहे हैं कि follow the leader, everyone else is doing it. Maybe that's why organizations अपने process को change करती हैं कि जो leader कहता है उसको follow कर लेती हैं. Number 2, a champion. An executive heard about it or read about it somewhere. ठीक है कि जी आपको किसी ने कहा कि जी आप इम्प्रूव करो तो हमने इम्प्रूव कर लिया. थर्ड, कि जी कस्टमर आपका डिमांड कर रहा होता है. इट्स बेसिकली अ प्रॉड कि जी कस्टमर इज डिमांडिंग इट एंड ही इज एक्चुअली चेंजिंग, ही कस्टमर इज डिमांडिंग इट, सो यू नीड टू चेंज द प्रोसेस. Then it may be a cause. If we don't do something, we won't survive. कि जी for your survival it is necessary कि आपको change करना पड़ेगा. Technology की field में we can talk about it कि जी if you are thinking कि जी अगर Windows 95 very classic Windows थी and it felt कि it was the unbeatable, unshakable और कमाल का वो function करती थी, लेकिन जैसे 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 time गुजरता गया now we have Windows 8 आ गई. ठीक है, अब दे सेड कि भी अब नहीं हम विंडोज़ नहीं लेके आए बल्कि अब इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे. ठीक है, सो देयरफॉर इट माइट बी कॉज कि अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करते तो आप सर्वाइव नहीं करोगे. सो पहला आपका क्वेश्चन था व्हाई डू, अब होता है व्हाई शुड. ठीक है, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई शुड ऑर्गेनाइजेशंस डू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. अब इसमें है पहला आपका as a means to achieve organizational goals, objectives derived from strategic plans. कि जब हम अपने strategic plans बनाते हैं we are actually looking into कि जी आपको इस वजह से improvement करनी है क्योंकि आपने इन objectives को achieve करना है. If you do not improve those objectives, then what happens that you are going to fail behind, you are going to fall apart. So therefore what we do is कि हम क्या करते हैं, हम इन प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वी एक्चुअली ट्राई टू इम्प्रूव द प्रोसेस. देन ऑलवेज मेंटेन द लिंक टू द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज. जब भी अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो व्हाट वी डू इज वी मेक स्ट्रैटेजीज, एंड व्हेन वी आर मेकिंग दीज स्ट्रैटेजीज व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी वांट टू improve the process. उसके बाद if you don't, the process improvement effort will not survive an economic downturn or the loss of the key sponsor. Then think about program management. What I do is that my advice to organizations used to be treat process improvement efforts as a project. कि जब आप एज अ उसको प्रोजेक्ट लेते हैं एक प्रोसेस इम्प्रूवमेंट को तो दैट गेट्स बेटर. दिस मे नॉट गिव इनफ एम्फसिस टू क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. ठीक है, प्रोग्राम मैनेजमेंट इज अबाउट टाइंग द इम्प्रूवमेंट एफर्ट टू द गोल्स, objectives and ensuring that process capabilities developed return measurable results. कि जो भी आप improvement कर रहे हैं that should give you some results, should tangible results, वो आपकी बैलेंस शीट में शो होने चाहिए. Otherwise that improvement is null development. It is not जिसे कहते हैं it is not helpful, it is not basically
it's not going to give you any profits. और जब भी हम process improvement कर रहे हैं, our objective is that okay, it should give you some tangible results, it should change the people, change management is kind of process improvement. उसके बाद आपका जो hiring के अंदर कुछ हो सकता है process improvement, आपकी production के अंदर process improvement हो सकती है, आपके product के अंदर improvement हो सकती है. So process is basically the set of sequential steps. जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसको shorter कर सकते हैं, हम उसको लंबा कर सकते हैं, हम उसको वो जैसे कहते हैं trouble free कर सकते हैं. So therefore what we are trying to do is that we are actually improving the process at every stage. Now this may not give enough emphasis to the critical success factors. Program management is about tying the improvement effort to the goals, objectives, ensuring that process capabilities developed return measurable results. ये मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया. For more information, you can Google OGC Managing Successful Programs. So basically जब एक बड़ी organization होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको as a project ले लें ताकि जल्दी improvement उसके अंदर rapid आ जाए. So why के बाद now we talk about the question of how. ठीक है, how we are going to do it. अब there are lots of ways जिससे हम अपनी process के अंदर improvement लेके आ सकते हैं. We have done most of it in the last few chapters, and if you remember, number one is your SPC, that is your statistical process controls. फिर TQM, Total Quality Management, ISO, International Organization for Standardization है, फिर Six Sigma है, फिर Spice है, फिर Lean है, फिर Six Sigma Lean है, and there are other quality tools. Now again you would see an interesting phenomena कि यहाँ पे we are actually improving the process by the quality, ठीक है, by using these quality tools. So हम improvement इस तरीके से लेके आ रहे हैं as if we are improving the quality, but it is beyond than that. जब हम process improvement की बात करते हैं, don't just think that it's just about quality. It may be about cost, it may be about delivery, it may be about आपकी जो है new product development. So process can be for any reason, और आप जो tools use कर रहे हैं वो भी सिर्फ इनके पे restricted नहीं हैं, ठीक है. You can use many other tools. It depends कि आप किस situation में और कौन से objective को achieve कर रहे हैं. Now define models. जब हम मॉडल्स को डिफाइन करते हैं तो जब वर्ड मॉडल आता है तो व्हाट कम्स इनटू योर माइंड, ठीक है. इट बेसिकली कैन बी, well that's funny, but the word model, that is the first thing that comes to your mind. ठीक है, या फिर ये आ जाता है कि नया कार का मॉडल आ गया, but what we are talking about एक ये वाला आ जाता है कि जी you are the role model for the country. But this is not we are talking about. All three, no. What we are talking about is a model is basically process improvement के अंदर. It is a collection of process elements and practices that can be used as a pattern for process development and a criteria against which process can be assessed objectively. ठीक है. अब आपने एक प्रोसेस के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस के अंदर जैसे ही आप इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, व्हाट वी आर लुकिंग इनटू इज कि जी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किसी क्राइटेरियन के अगेंस्ट आप लेके आए हैं कि जी अब ये बेहतर हो गया है. इट कैन बी कि जी आपने कोई इंटरवेंशन की, सो माय प्रोसेस कैन एक्चुअली बी वर्सन ऑफ, ठीक है ना. देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे वी डू ब्रिंग चेंजेस, हम चेंजेस लेके आते हैं लेकिन वो चेंजेस में भी कामयाब नहीं होते, ठीक है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है. सो हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं. मॉडल्स क्या करते हैं कि जी ये डिफरेंट एलिमेंट्स का वो होता है, कॉम्बिनेशन होता है. आप अपने प्रोसेस को डेवलप कर रहे होते हैं और एक आपने क्राइटेरिया बनाया होता है जिसके अगेंस्ट आप अपने प्रोसेस को असेस कर सकते हैं कि भाई आइदर मेरा प्रोसेस ठीक है या मेरा प्रोसेस गलत है. नाउ प्रोसेस इंप्रूवमेंट मॉडल्स, कुछ आपके एग्जांपल्स इन मॉडल्स के कौन से हो सकते हैं? दैट इज ISO 9001, देन CMMI. CMMI क्या होता है? कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड. MBNQA ये हमने लास्ट टाइम एक दो डिस्कस किया था, दैट इज योर मैल्कम बालरिच अवार्ड्स. उसके बाद आपके ISO 15504, इसको हम कहते हैं स्पाइस. अब
Models के बाद now we talk about different approaches. Now what are the approaches? How do we define approach? It's basically an approach is any methodology or system of tools that is being used to guide problem solving या management. ठीक है? Again I'll repeat it. An approach is any methodology or system of tools that is being used to guide problem solving management. अब ये कौन सी approaches हो सकती हैं? That is your total quality management, that's your Six Sigma, that's your lean management. ठीक है? Now look at the models / approaches. कहीं पे आप अपने models use कर सकते हैं और कहीं पे आप अपनी approaches use करते हैं. And each one developed to address certain problem. यानी every model has been developed to address certain problem. You can't say कि जी अगर आप Six Sigma लगा रहे हैं तो सारी बीमारियों का वो हल कर देगा organization के अंदर, improvement overall आ जाएगी. No, it is just looking at one dimension. Resolve a certain issue. Now, ISO 9001. Let's talk about this. We have earlier discussed it, but let's talk in detail. अब इसके अंदर क्या है? What are the requirements? Quality management system आपका होना चाहिए, management responsibility होनी चाहिए, resource management आप करें, product realization करें, measurement analysis and improvement करें. These are basically, अगर आप ISO 9000 certified, 9001 certified, these are some of the requirements that you have to fulfill. Now, focus in practice is usually on establishing foundational processes and being able to fly the flag, and it should be used for much more. अब ISO का जो concept है, that basically came after the during the Second World War II. ठीक है ना? वर्ल्ड वॉर के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया कि जी जब आप एक डिफरेंट, क्योंकि वो जैसे कहते हैं एवरीवन वाज इन द वॉर इंडस्ट्री, एवरीवन वाज प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग, सो मैं कुछ बना रहा हूँ, वो कुछ बना रहे हैं, बट वी नीड अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. सो आपने वेपन्स को स्टैंडर्डाइज करना था, तो आपने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना लिए जिनकी बेसिस पे आपका क्या हो जाता है, वेपन आपका स्टैंडर्डाइज का होना था. सो फ्रॉम देयर यू मेड दी स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद फिर आपका स्विट्जरलैंड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज बेसिकली से व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू से. और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कुछ अपने स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं, हर प्रोसीजर को हम डॉक्यूमेंट करते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके प्रोसेसेस में या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, या अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर sluggishness आई हुई, या if your organization is not progressing, what we are doing is that we are actually looking into कि जी आपकी ये जो है जो ISO के जो आपने कंडीशंस हैं, वो ये कहते हैं कि जी आप जो भी कहते हैं वो आप करें. अब जो हमने देखा है कि क्यों नहीं हो रहा, द रीज़न बीइंग दैट मोस्टली जितने भी आप प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, दैट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन वो जैसे कहते हैं ना, इट्स नॉट रिटन एनीवेयर. मैं वही काम किसी और तरीके से करूँगा, दूसरा आदमी कोई और तरीके से करेगा. सो इसीलिए इफ़ यू हैव चिप्स एट अ स्मॉल शॉप वेयर आर नो प्रोसीजर्स डिफाइन, वहाँ पे कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी चिप्स जल जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा. बट इफ़ यू गो टू मैकडॉनल्ड्स यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ चिप्स ऑल द टाइम. नाउ हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज अगर आप जैसे कहते हैं प्रोसीजर्स को देखें तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स, चाहे मैं चिप्स बनाऊँ चाहे कोई और बनाए, द प्रोसीजर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड. ठीक है? सो वी हैव टू इंश्योर कि जी जितना भी है प्रोसेस वो क्या हो जाए, स्टैंडर्डाइज हो जाए, कि कोई भी उस पर आके काम करे. आपका जो एंड प्रोडक्ट है, यहाँ आपका जो प्रोडक्ट है, that is basically a standardized one, that is basically a quality one, that is basically कि कहीं पे भी प्रोसेस हो जाए उसकी जो क्वालिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. अब CMMI के अंदर होते हैं 5 लेवल होते हैं. लेवल 1 इज बेसिकली विद रेफरेंस टू प्रोडक्ट. लेवल 2 से आपका क्या आ जाता है, आपका प्रोसेस एरिया स्टार्ट हो जाता है. अब प्रोसेस एरिया में कौन कौन से हैं, इट रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, ये अभी हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं. ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कैसे होगी. देन वी टॉक अबाउट सप्लायर का एग्रीमेंट, सप्लायर एग्रीमेंट मैनेजमेंट कैसे होगा, योर ऑल प्रोक्योरमेंट. उसके बाद मेजरमेंट एंड एनालिसिस कैसे होंगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे होती है, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट कैसे होगी. ना जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं, वी आर जस्ट एट लेवल नंबर 2.
फिर हम लेवल 3 पे जब जाते हैं उसके अंदर फिर हम वी स्टार्ट लुकिंग इनटू द टेक्निकल सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, वैलिडेशन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस फोकस, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस परफॉर्मेंस. And then when we go to level number 4, that is basically quantitative project management and organizational innovation and development. और जब हम level 5 पे जाते हैं, that is basically your optimization, it's basically your organization innovation and deployment and causal analysis and resolution. So once you are going through all these levels, that actually tells you कि जी हमने CMMI को achieve कर लिया है. So there are 5 maturity levels in CMMI. Level 1 is product development, level 2 is management, level 3 is defined, level 4 is quantitatively managed, and level 5 is optimizing. So 5 maturity levels, 22 process areas. There are specific goals, specific practices, generic goals, generic practices, and basically the product is on product development process maturity. Moving on to the next one. This one is a better slide. I will delete the other one once you get the slides, but ये आपके सारे हैं जो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे. Then comes your Balraj Awards. अब that is basically हम process की बात कर रहे थे, लेकिन process को manage कौन कर रहा है? Process की management हो रही है आपके human beings, ठीक है, आपका staff कर रहा है, आपके employees कर रहे हैं और आपकी human resource कर रही है. Now human resources is basically the oil of any industry. उनके बगैर आपका काम नहीं हो सकता, ठीक है. So that key factor has to be involved. अब उसके अंदर कौन कौन से आपके काम आ जाते हैं कि जी Malcolm Balraj Awards बनाए, and it is basically जो उन्होंने 7 categories इसके अंदर define की अपने improvement के लिए. अगर आपने देखना है कि आप बिजनेस एक्सीलेंस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, और अगर आपने बिजनेस एक्सीलेंस अचीव करनी है, व्हाट यू हैव टू सी इज नंबर 1 इज योर लीडरशिप. लीडरशिप के अंदर वो क्या कहते हैं कि जी इसके 120 पॉइंट्स हैं. सो टोटल जो असेसमेंट होती है दैट इज आउट ऑफ 1000 पॉइंट्स, और लीडरशिप के अंदर देयर आर 120 पॉइंट्स. इसके अंदर आपके आते हैं सीनियर लीडर्स, गवर्नेंस और एथिक्स का इशू होता है. नंबर 2 आपका एरिया आ जाता है दैट इज योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आपके 85 पॉइंट्स होते हैं. इसके अंदर आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, एक्शन प्लान्स, डिप्लॉयमेंट है. फिर आपका क्या आ जाता है कस्टमर एंड मार्केट फोकस. इसके हैं आपके 85 पॉइंट्स. इसमें आ जाता है कस्टमर, फिर कस्टमर और फिर कस्टमर, हाउ कस्टमर इज एक्चुअली बीइंग ट्रीटेड, हाउ कस्टमर परसीव्स योर प्रोडक्ट एंड हाउ ही इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. Then comes measurement analysis and knowledge management. इसके भी होते हैं आपके 90 points, and what we are looking at is data availability, usage, communication, systematic performance improvement. उसके बाद आपका होता है workforce focus. Workforce focus में हम क्या करते हैं, इसके 85 points हैं. इसके अंदर high performance, alignment, capability, capacity. उसके बाद आपका क्या आ जाता है process management. Process management में there are 85 points. Core competencies, work systems and customer value sustainability. Then comes your results, और results के अंदर क्या होता है your outcomes, performance, process effectiveness, customer focus, उसके बाद financial focus, workforce focused और leadership driven. अब जब इन एरियाज के अंदर आप उनकी असेसमेंट करते हो, इट क्यूमुलेट्स टू अबाउट 1000 पॉइंट्स, और आपको फिर इन 7 कैटेगरीज के बाद पता चलता है कि आपने बिजनेस एक्सीलेंस आपने अचीव की है या नहीं की. नाउ स्पाइस इज बेसिकली ISO IEC 15504. This was basically a European answer to CMMI. ये भी गालिबन आई थिंक मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ाया था. There's 2 models. One is process reference model and one is process assessment model. और डोमेन स्पेसिफिक होता है, एक आपका ऑटोमेटिव स्पाइस होता है, और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली फॉर ऑटो इंडस्ट्री में यूज़ होता है. अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, आवर मेन फोकस इज ऑन प्रोसेस मैच्योरिटी एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट विद कस्टमाइजेशन टू स्पेसिफिक डोमेन्स. अब ये हैं आपके डिफरेंट ये जो स्पाइस के आई एम टेलिंग यू कि जी पहला आपका होता है एक्विजिशन प्रोसेस ग्रुप, फिर सप्लाई प्रोसेस ग्रुप, फिर मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप, इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप, ऑपरेशन प्रोसेस ग्रुप, रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस ग्रुप, support process group, process improvement group and reuse process group.
सो ये जो आपके मेन है, जो अगर आप पहला बॉक्स देखो दैट इज बेसिकली योर प्राइमरी लाइफ साइकिल प्रोसेसेस, द सेकंड आप देखते हैं दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल प्रोसेसेस, और थर्ड आप देखते हैं दैट इज बेसिकली supporting life cycle processes. ठीक है, so these are basically the areas in which we are looking into the processes. ठीक है, we call it as ISO IEC 15504. This is basically your automotive spice. अगर आप देखें इसके अंदर जो टॉप पे, when you look at the slides, obviously over here the font is small, but that is the same. It's an example of primary life cycle processes, organizational life cycle process, and supporting life cycle processes. This is the German example, और ये आपका उसके अंदर आ गया. अब आ जाता है TQM. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी हमने पीछे पढ़ा था, बट गिवन कि अब ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट का चैप्टर है, दैट्स व्हाई वी नीड टू जस्ट रिफ्रेशिंग आवर मेमोरी. इसके अंदर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द TQM इज अ मैनेजमेंट अप्रोच फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड ऑन क्वालिटी बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ all its members and aiming at long-term success. So it's a long-term procedure. Long-term success through customer satisfaction and benefits to all members of the organization and to society. Now, focus is on in involving everyone and all aspects of the business in problem solving. ठीक है? Now, basically what we are looking into is कि जी आपका ये total organizational setup होता है, ठीक है, और इस organization के अंदर जो key concept होता है that it's basically TQM. सिर्फ आप एक एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी को नहीं देख रहे, आप टोटल एस्पेक्ट को देख रहे हैं, एंड बेसिकली यू आर लुकिंग इनटू द होलिस्टिक पार्टिसिपेशन. और जैसे जैसे आपकी पार्टिसिपेशन होती है वैसे वैसे आपका जो इंक्रीज होता है in terms of your customer base, that is dependent upon that. क्योंकि customer जितना satisfy होता है उतनी ज़्यादा आपका वो जैसे कहते हैं you are actually moving towards the this path of improvement. If the customer is dissatisfied even with your improvement, then we have to recheck our strategies. Maybe our market research is not sufficient. Maybe whatever customer wanted we are not delivering it. Maybe whatever we are delivering that is not according to customer's choice. So therefore, we have to rethink about it. So total quality management is a broader concept, and it talks about the long run, or it talks about the long run success of the organization. Now comes the Six Sigma. In Six Sigma, what we are looking into is कि होता ये भी quality का aspect है, but it is more disciplined. ठीक है? It is data driven approach and methodology for eliminating defects, driving towards 6 standard deviations between the mean and the nearest specification limit. तो ये इसमें अब आप क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा आपके quantitative data यूज़ हो रहा होता है, और we are trying to have a quality product. अब DMAIC ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, और इसके अंदर आपकी आ जाती हैं डिफरेंट रैंक्स होते हैं, दैट इज़ योर ग्रीन बेल्ट, योर ब्लैक बेल्ट. और what we are trying to do over here is that our focus is on eliminating sources of error, variation, with emphasis on financial impact. Then comes your lean. And now what we are doing in lean is that it is basically a practice that considers the expenditure of resources for any goal other than the creation of value for the end customer to be wasteful and thus a target for elimination. Focus on cutting waste. So lean management में हम क्या कर रहे होते हैं, we are actually talking about cutting the expenditures. और you would see कि जी Toyota वगैरह ने ये concept start किया था, and basically what the philosophy is कि one of the issues is कि हमारी costs क्यों high हो रही होती हैं. There are two ways by which you can actually earn profit. One is increasing the profit, and second one is decreasing the cost. अब usually जब हम process improvements में देख रहे होते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा एक aspect नज़र आएगा, that is basically the
increase in the cost. और increase in the cost क्यों हो रही होती है? That there is a lot of wastage, because yes, we are pursuing for the quality, but जैसे जैसे हम quality की persuasion कर रहे होते हैं, as we are pursuing towards the achievement of our quality, ठीक है ना, as we of a quality, तो हम क्या कर रहे हैं? Wastage बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं. So in order to minimize that waste, what we do is that we start doing some lean management. I can give you some practical examples in Pakistan. I know one software house. Now they have tried, Google to nahi, but they have tried to follow the same Google example, Google ke model pe. They have tried to make their office. Fine. And it's based in Lahore. I won't name the organization. But what they're doing is that there are no controls. They have given great autonomy. And in that autonomy, what they're asking the employees is कि जी आप अपना जितना आपने वो करना है productivity आपने देनी आप दें. Food is available, food is free over there, and you can sit as long as many hours you want to sit in the office. There is no closing. उसके बाद आपका जो 24 hours है, the office is open. Now this is the time of Ramadan, and I visited the office, and it was after 5 or 6 o'clock, and people were sitting over there. When I started talking to them, and it came out that at night either it's just the movie downloads because it's an IT company, or it's just the browsing on the Facebook or all that. Okay? Now, given that Lahore is a victim of a lot of energy crisis, okay? अब जितनी ज़्यादा आपकी energy crisis हो रही है, उतनी ज़्यादा आपकी cost क्या होती जा रही है? High hoti ja rahi hai, cost of production. So what the company has done is, in order to give you a completely वो जैसे कहते हैं ना free environment, in order to give you completely power shortage के बगैर का environment, तो उन्होंने generators बहुत बड़े बड़े लगाए हैं और generators पूरी रात चलते हैं. And an organization may be just one floor, उसका bill monthly of electricity, or this electricity cost is around 1 crore. That is just a random number, which is just coming in the month of, I think, June या July के अंदर उनका आया होगा. But just imagine that अब human resource को अगर आप देखें तो human resource is not contributing it by the after 5 o'clock or after 6 o'clock, and all night they are just doing their personal work, because at home there is no electricity, so they take advantage of the organization. Now in this situation, I always ask the managers that, okay, now what you say, are we going towards the process improvement? Well, if you look at the philosophy, it's really good. You have opened the organization 24 hours, you have given the employees flex time, you have given them free food, you are paying them really high packages, but are they actually contributing it? Is that a process improvement? For some would say yes. Lekin I think before going for such hardware changes कि आपने organization एकदम ऐसी बना ली है, I think we need to ethically train the employees also कि we treat them as your organization. अगर आप एक month में उसको 1 crore का वो दे रहे हो, बिजली का सिर्फ बिल दे रहे हैं, that's not justified. And just you are not going home, you are not even working in the organization after a specific time, because you can't work 24 hours. So it's actually taxing the organization. और अगर organization revenues ना उतने ले सके, ना वो profit ले सके, तो the same Google culture will be stopped. ठीक है? अगर Google ये सारे काम करता है, तो basically what Google is doing is that it actually improves. ठीक है ना? It actually improves the organization. It actually brings profit. जो उनका staff है, they are working day and night. If you see their offices, they are just like your bedrooms. So they are actually contributing towards it. They don't just doing just Facebook at night and all that. The people are conscious that if they are sincere with the organization will give them output. But if they are not sincere, and if they are just exploiting the resources क्योंकि वो सिर्फ free हैं, क्योंकि आपको salary भी मिल रही है, and apart from those perks and privileges, you are actually going to waste everything. ठीक है? So therefore,
लीन का जब कॉन्सेप्ट आया, दिस इज बेसिकली ये जापानीज कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने कहा जी वेस्ट को ख़त्म करें, बिकॉज द मोमेंट आपकी वेस्ट इंक्रीज होने लग पड़ती है, आप वो कहते हैं ना, आई ऑलवेज टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही लव्स टू कुक, लेकिन बाय द टाइम ही इज डन विद द कुकिंग द किचन इज अ टोटली मैस in comparison to there's another guy who enjoys making food but who कितना किचन मैस नहीं करते. So दूसरी साइड पे वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, फिर उस डिलिशियस फूड का फ़ायदा नहीं अगर आप इतना ज़्यादा वेस्टेज कर देते हो, इतनी ज़्यादा चीज़ें आप ज़ाया करते हैं, ठीक है. So therefore we have to start cutting down the waste if we are actually looking into the improvement. So that actually one of the forms of the improvement. कि अगर आप अपने waste को कम करते हैं, अगर waste को हम कम करते हैं, so that's actually a good sign. But it's difficult. I was teaching behavioral econ का एक course था, तो होता ये है कि जब wastage होता है, there are a number of things that are right now lying in your room which you don't really want to give up. हमारी एफिलिएशन हो जाती है, आप नई चीज़ नहीं लेके आएंगे क्योंकि पुरानी चीज़ अभी चल रही है या पुरानी चीज़ ने अभी वो स्पेस ली हुई है, क्योंकि हमारा पुरानी चीज़ों के साथ एफिलिएशन बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट, वो जैसे कहते हैं, वी डू नॉट वांट टू, वो जैसे कहते हैं डंप नहीं हम करना चाहते. सो देयरफॉर व्हाट टू बी डन इज दैट वी हैव टू चेंज द पीपल दैट ओके when you are using these resources, when you are using these resources, तो आपने जो डंप करने होते हैं या जो आपने चीज़ें वेस्ट करनी होती हैं, आप उस तरीके से वेस्ट ना करें, because things are not in abundance, things are scarce. So when things are scarce, you need to be very careful. Only उतना ही काटें. For example, अगर हमने, I'll give you a very small example, अगर हमें पानी पीना है तो हम पूरा ग्लास भरते हैं, पीना हमने एक घूंट होता है. That is a wastage of resource. So our target is कि आपने eliminate करना होता है अपने waste को. Wastage जितना कम generate होता है, उतनी ज़्यादा आपकी cost क्या हो जाती है, drastically आपकी reduce हो जाती है. Now, the third question that comes, that is there something better? ठीक है, हमने why कर लिया, क्यों हम करना चाह रहे हैं, हमने how कर लिया, कैसे करेंगे, जिसमें हमने मॉडल्स पढ़े, हमने different approaches पढ़ी. Now we talk about कि what we can do, is there something better? अब इसके कुछ pros and cons हैं, ठीक है. अब pros and cons के अंदर we have to answer some questions, और इन questions के अंदर the first thing is that what are your goals, objectives and strategies. हमें ये पता होना चाहिए, because if we don't know our goals, if we don't know our objectives, if we don't know our strategies, then it is not going to work out. फिर what's your SWOT look like? After you know your goals and objectives, then we need to make sure कि हमारी different strategies क्या है. After you know, क्योंकि strategies आपकी उसी वक्त बनती हैं जब आपके पास आपका goal या objective हो. Then what's your SWOT look like? In SWOT analysis, what we are doing is we are looking into strengths, weaknesses, opportunities and threats. उसके बाद what are your pain points? Pain points is basically कि जी कहाँ पे हमें improvement की ज़रूरत होती है. जब आपको वो होता है ना, determine the customer pain and you will find an opportunity. तो इसीलिए इसी तरह हर organization के अंदर कुछ pain points भी होते हैं. उसके बाद what do your organization demand or want? आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि जी मेरा customer मुझसे demand क्या कर रहा है. And the last one is what is your corporate culture. Same example I was giving you, just by having Googleplex in Pakistan doesn't make you कि आप भी Google company बन जाएंगे. There is nothing harm in copying, ठीक है. Now ये जो है आपका corporate culture के अंदर आपकी जो importance है, ठीक है, that is important. And there is no harm in copying such a thing. लेकिन क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है? We have to see कि क्या हमारे कल्चर के अंदर वो चीज़ मैच करती है. If you look at the Japanese culture and if you look at the one is Japanese culture and another one is your American culture, totally different. ठीक है.
and if you're working in a Japanese firm and then you work in an American firm, दोनों के corporate cultures फ़र्क हैं. If you're working in a automobile industry or if you're working in an oil industry, दोनों के corporate culture फ़र्क है. So ये जो cultures होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको वो करते हैं. In terms of improvement, they play a very crucial role. कुछ cultures आपके होते हैं which are very much open, which are very much like looking into the improvement, and some cultures are actually stopping you from doing things. Some cultures are very much वो जिसे कहते हैं they put you a barrier कि जी आप करना भी काम चाहते हैं लेकिन वो culture आपको allow नहीं करता. ठीक है. So जो corporate culture होता है that actually forms or that actually makes a road map कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट है वो किस तरीके से होगी. ठीक है. सिमिलरली जब हम कहते हैं जी आपका कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर कुछ नहीं डिमांड करता, कस्टमर को पता ही नहीं. ठीक है. कस्टमर इज़ वेरी मच सैटिस्फाइड विद द सिंपल प्रोडक्ट दैट यू हैव डन, बट इज इट सफिशिएंट? बिकॉज चेंज इज़ नेसेसरी. चेंज आपको लाना है. उसके बाद आपको SWOT आपको पता होना चाहिए. वंस यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अनदर फर्म देन यू नीड टू नो कि जी मेरे कौन से SWOT पॉइंट्स हैं. सो जब इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं तो फिर हम व्हाई डू वी पुट ब्लाइंडर्स ऑन. ठीक है. इसके अंदर भी ये है दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन द सेम एज दैट ऑफ द डेवलपर्स ऑफ एनी ऑफ दीज मॉडल्स. द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट आई वाज आस्किंग. ठीक है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सेम है अगर मैं गूगल का बना लेता हूँ, अगर मैं कॉमसैट्स को हार्वर्ड का मॉडल बना लूँ, क्या हम दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशंस हैं? भाई मुझे अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए. इंस्पिरेशन ज़रूर करें लेकिन यू कांट रेप्लिकेट द होल थिंग. डू योर नीड्स मैच देयर कि मेरी नीड्स और उनकी मैचिंग सेम है. इट्स ईजी टू टेक व्हाट वर्कड फॉर देम, बहुत ईजी है, एंड अप्लाई इट इन योर ऑर्गेनाइजेशन. We don't have to think. No analysis required. That's a very big question for you if you are tying up in the operations field. कि जी अगर आप कहते हैं कि नेस्ले ने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की थी तो क्या इस वक्त कनौर भी वो स्ट्रैटेजी यूज़ करे तो विल ही बी सक्सेसफुल? क्या हमें एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है? We need a very stringent, very strong analysis. अगर आप देखना चाहते हैं कि जी अगर मैगी नूडल्स इस तरीके से लॉन्च हुआ था तो कनौर के भी नूडल्स क्या वैसे ही लॉन्च होंगे? We cannot use the same strategy. There is a Nobel laureate in economics. His name is Joseph Stiglitz. और उसने बुक लिखी Globalization and its Discontents. And one of the points that he makes is, and I very much agree to it, that one size does not fit all. आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है अब यही स्ट्रैटेजी आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं. यू आर अ मैनेजर, यू हैव बिन अ वेरी जैसे कहते हैं हाई कैलिबर मैनेजर. आपने एक पेंट्स की फर्म चलाई और उसके बाद अब आपको मैंने एक दे दिया, एक फूड ऑर्गेनाइजेशन दे दी. कैन यू एक्चुअली रन दैट फूड ऑर्गेनाइजेशन? नो, वी कांट. ठीक है. मरेसा मायर इज राइट नाउ गूगल से उसको लेके याहू के अंदर लेके गए. दोनों कंपनी सेम थी. दैट्स व्हाई. बट इफ यू सी द प्रोफाइल ऑफ मरेसा मायर से पहले 2 CEOs गूगल याहू लेके आया और दोनों को उन्होंने फायर कर दिया. पीपल हैड वेरी हाई होप्स कि भी ये जब ये CEOs लेके आए, लेकिन द थिंग वाज कि वो जिन ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, वो जिन मॉडल्स को यूज़ करके आए थे, दे कांट बी अप्लाइड इन याहू. So that's why Yahoo never got the same kind of improvement that it was expecting. Google and Yahoo, same search engines, ठीक है. Google might be much more sophisticated, लेकिन Yahoo was earlier in the market as compared to Google. So therefore, what we say is कि जी आपकी चीज़ें improve हो सकती हैं. That's why ऐसे कि जी FMCG के जो managers हैं वो FMCG में ही successful रहते हैं. ठीक है ना. एक एकेडमिक एक मार्केटिंग गाय नहीं बन सकता, एक रिसर्चर नहीं. एक एकेडमिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कभी भी चीज़ें उस तरीके से नहीं बेच सकता जिस तरीके से एक आम MBA बेचेगा. ठीक है. बट डू यू से कि भी एन MBA इज मच मोर एजुकेटेड? नो, ही इज़ नॉट अ PhD, बट अ प्रोफेसर इज. सो वी नीड टू सी कि जी इट इज़ वेरी ईजी कि आपने कोई स्ट्रैटेजी उठाई, इट हैज़ वर्कड वेरी वेल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऐसे किया तो हम भी ऐसे कर लेंगे. दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान के भी अंदर और इवन इन द वेस्ट, दैट वी जस्ट फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ स्ट्रैटेजीज. वी जस्ट थिंक कि जी आपने अगर
इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ये वाले आपने सारे वो यूज़ किए हैं, जो कहते हैं प्रोटोकॉल्स, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप सिमिलर टाइप काइंड ऑफ कल्चर लेके आ रहे हो, स्टिल योर सक्सेस डजंट डिपेंड अपॉन इट, वी कैन नॉट से दैट। एक मैं सिविल सोसाइटी से एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने किसके साथ काम किया, उन्होंने ये जो थी मदर्स थी, इनके साथ काम किया, ठीक है। मदर्स हु जस्ट गिविंग बर्थ टू यंग चिल्ड्रन, ऑब्वियसली हु वर गिविंग बर्थ इन प्रेग्नेंट वुमेन के साथ वो काम कर रहा था, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन। एंड दे वुड काउंसिल द मेन, और उन खवातीन के साथ उनका डाइटरी प्रोग्राम था कि जी खवातीन को डाइट अच्छी दी जाए, तो उन्होंने उन खवातीन के साथ इंटरेक्शन करना शुरू की। एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन लैटिन अमेरिका। अब जब लैटिन अमेरिका के अंदर वो प्रोजेक्ट चल रहा था, सो दिस प्रोजेक्ट वाज गोइंग ऑन, एंड all these वो जैसे कहते हैं protocols we followed, and ultimately after 5 years the project was a huge success, pretty good. अब जनाब इन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है, so let's replicate it in बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर उन्होंने वही प्रोटोकॉल्स, वही सब कुछ, वही वाली जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इट्स ईजी टू टेक व्हाट वर्कड फॉर देम एंड अप्लाई इट इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर सेम प्रोजेक्ट अप्लाई किया, खवातीन के साथ काम किया, उनको डाइटरी प्लान्स बताया, सारा कुछ। बट आफ्टर 3 to 4 years जब प्रोजेक्ट आपका ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगा, दे कुडंट सी सक्सेस। उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट के अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं, वी डोंट गेट एनी सक्सेस इन दैट प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ दे स्टार्टेड लुकिंग इनटू इट कि जी हमने तो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, एक सक्सेस स्टोरी उठाई थी, व्हाई इट हैजंट नॉट अप्लाइड इन बांग्लादेश। नाउ व्हाट हैपेंस दैट व्हाट रिसर्च फाइंड्स आउट कि जी जो लैटिन अमेरिका में जो डिसीजंस हैं, वुमेन अपनी डिसीजंस खुद लेती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजंस थे, क्योंकि इट्स अ कंबाइंड फैमिली सिस्टम, यहाँ पे मदर इन लॉज लेती हैं कि जी क्या खाना आना है, व्हेन द वुमन इज़ प्रेग्नेंट क्या होना चाहिए। सो देयरफॉर इन्होंने कहा कि जी ये तो आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसमें मदर इन लॉ को आपने इन्वॉल्व किया ही नहीं, और जितने भी खाने पीने की डिसीजन होती है वो आपकी मदर इन लॉ ले रही होती है ना, कंबाइंड फैमिली सिस्टम। और बांग्लादेश में ऐसा है, प्रेवलेंट इन द रूरल एरियाज। सो देयरफॉर वी कांट जस्ट से कि जी आपने एक प्रोजेक्ट उठाया, आपने एक सक्सेस स्ट्रैटेजी उठाई और आपने अपनी कंपनी में अप्लाई कर दिया, यू आर शॉर्ट विदाउट डूइंग एनी एनालिसिस दैट दिस particular strategy is going to be successful. So it does not make sense. You cannot do that. You can't say कि जी मैंने अगर ये वाला काम इस ऑर्गेनाइजेशन में किया था तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट कल्चर फ़र्क था, कस्टमर नीड फ़र्क थी, स्वॉट फ़र्क था, मिशन फ़र्क था, गोल्स फ़र्क थे, स्ट्रैटेजीज फ़र्क थी, और हम उस फॉर्मुलेशन में हमने वो चीज़ वहाँ पे अप्लाई की थी। हाउ कैन वी अप्लाई इट इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन? सो दैट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल एज ऑपरेशन मैनेजर। अब आपके दो हैं जो सेकंड की है, एक तो हमने बात की कि मॉडल्स आप अप्लाई करते हैं, अप्रोचेस यूज़ करते हैं। सेकंड ये है कि आपके डिफरेंट टूल बॉक्सेस होते हैं कि जी कौन से टूल कब इस्तेमाल करना है। यू हैव दीज टूल्स, ठीक है। आपने अगर एक नेल को, एक वो कील को अगर दीवार में लगाना है तो आपको क्या चाहिए? हथौड़ा चाहिए। लेकिन अगर आपने एक कील को मे बी उतारना है तो आपको हथौड़ा चाहिए, तब आपको डिफरेंट टूल चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स। नाउ अब हमें क्या चाहिए कि मैचिंग हमने करनी होती है प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथड्स टू नीड्स। क्या आपके नीड क्या है और आपकी प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या है। सो नंबर 1 ISO 9001। अब इसका फोकस क्या हो रहा होता है कि इट इज़ यूजुअली एस्टैब्लिशिंग फाउंडेशनल प्रोसेसेस एंड बीइंग एबल टू फ्लाई द फ्लाई। CMMI का क्या होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस मैच्योरिटी। MBNQ है बारवेज अवार्ड्स बिजनेस एक्सीलेंस, इसका होता है फोकस। स्पाइस का क्या है? प्रोसेस मैच्योरिटी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट विद कस्टमाइजेशन टू स्पेसिफिक डोमेन्स। TQM का क्या है? इन्वॉल्विंग एवरीवन एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिक्स सिग्मा का क्या है? एलिमिनेटिंग सोर्सेज ऑफ एरर वेरिएशन, एम्फेसिस ऑन द फाइनेंशियल इम्पैक्ट। और लीन का क्या है? फोकस ऑन कटिंग वेस्ट। How can the organization realize the greatest benefit? अब organizations किस तरह अपने benefit को realize करती हैं? Number 1,
good, number 2 better, number 3 is your best. अब good में क्या है, which of the models approaches seems to be best fit or already has a champion. ठीक है, किन approaches में आप good हैं. better में क्या हो सकता है, what combination of elements from them will give strongest and quickest benefits in short term. हम long run को नहीं देख रहे क्योंकि time आपका लगता है आपका finance होता है, that's why. और जो best है, that is basically how is the choice going to help us reach our goals, objectives and achieve our goals in the long term. ठीक है, so that is basically. Now the question comes, ये हमें पता चल गया, हमें tools पता चल गया, हमें approaches पता चल गई, हमें ये पता चल गया कौन सा tool हमने कहाँ पे लगाना है, how to decide the decision making. Now you see कि when we are actually making these decisions, they are very crucial. आपका एक डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे ले जाता है और आपका सेम डिसीजन उसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके डाउनवर्ड ले जाता है. इसमें हमने क्या करना है, नंबर 1, व्हाट मेथड्स वुड यू सजेस्ट. आपके पास एक सिचुएशन है, आपके पास ये आइडिया है कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे जाना चाहती है, कहाँ पे हमने अपनी कॉस्ट कम करनी है, एम्प्लॉयज़ आपके कैसे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर आपका कैसा है, कस्टमर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो जो हैं आपके पेन पॉइंट्स क्या हैं. ठीक है, सो आफ्टर लुकिंग, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द सिचुएशंस, देन वी लुक इनटू व्हाट मेथड्स वुड यू सजेस्ट, कि कौन सा मेथड आप अप्लाई करते हैं. क्योंकि हमने मेथड्स देखे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अप्रोचेस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आप सारे मेथड्स भी यूनानिमसली अप्लाई नहीं कर सकते और आप एक सिचुएशन में सारे मेथड्स भी नहीं अप्लाई कर सकते. यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू डिसाइड. नंबर 2, लुक एट थिंग्स लाइक डिसीजन मैट्रिक्स. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी हैव टूल्स लाइक डिसीजन मैट्रिक्स, वी हैव टूल्स लाइक फोर्स फील्ड एनालिसिस एंड वी हैव द माइंड मैप्स. इस तरीके से हम हमारी डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है, इट कैन बिकम ईजियर. अब हमारी आ जाती हैं कंक्लूजन. अब कंक्लूजन के अंदर क्या होता है कि जी हमने बात की कि जब भी आप इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, व्हेनेवर यू आर ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट, तो उसमें आप क्या देखते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को क्या लेके आते हैं, आपने प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लेके आनी है और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट से आपको क्या मिलेगा, आउटकम्स मिलेंगे. ठीक है, जब अगर हमने स्ट्रैटेजीज अप्लाई की और उससे आपकी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो अगेन गो बैक, अगेन रीथिंक कि जी ये क्यों नहीं आपकी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट हो रहा. ठीक है, और आपको उसका आउटकम मिलना चाहिए. एज आई सेड, नॉट एवरी प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज गोइंग टू गिव यू. इसी वजह से हम कहते हैं जी डिसाइड, मे बी आपने टूल गलत यूज कर लिया है, मे बी यू आर नॉट यूजिंग इट एट द राइट टाइम, मे बी आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई है, सो इट इज नॉट गिविंग यू एनी बेनिफिट. सो देयरफॉर वी नीड टू सी कि जी टूल जो आप यूज करते हैं, इज इट एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट और नॉट, इज इट एक्चुअली गिविंग यू द डिजायर्ड आउटकम और नॉट. देन डोंट गेट हंग अप ऑन वन मेथडोलॉजी. As I said, start of the lecture मैंने कहा था कि जी I am here in this organization for the past 10 years, for the past 14 years. तो मैं तो हमेशा यही strategy यूज़ करता हूँ. Don't hang up on it. ठीक है, आपने जो strategy लगानी है, it has to be different. आपने जो strategy लगानी है, it has to match the environment. आपने जो strategy लगानी है, it has to match the customer need. आपने जो strategy लगानी है, it should meet your objectives, goals and what kind of environment जिसके अंदर आप लगा रहे हो. मैं same strategy पाकिस्तान के अंदर लगाता हूँ, it might give me very good results, लेकिन मैं same strategy इंडिया के अंदर लगाता हूँ तो it might be different. कंज्यूमर गुड्स अगर आप देखें, इंडिया के अंदर डिफरेंट हैं, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट हैं. ठीक है, so the second important point is that don't get hung up on one methodology. We should not be just relying on one methodology. Don't just study to the test. ठीक है, think the toolboxes जो कभी हमने बताया कि जी आपका फोकस क्या है. आर यू लुकिंग फॉर द बिजनेस एक्सीलेंस, तो ये वाला टूल लगाएं. साथ ही मैं अपनी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता हूँ, तो आप ये वाला कर दें. साथ ही मुझे लग रहा है कि मेरा वेस्टेज हो रहा है, तो एक आपकी बड़ी मज़ेदार किस्म की एक कॉकटेल बन जाती है. एंड यू यूज़ डिफरेंट टूल्स डिफरेंट टाइम्स, गिविंग डिफरेंट आउटकम्स, और आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका अचीव हो रहा होता है. एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस. देन लास्ट आपका जो आ जाता है, लुक एट द नीड्स एंड द बेनिफिट्स. सबसे पहले आपने क्या देखना होता है कि मॉडल को मत देखें कि जी मैंने ये लीन अप्रोच बस वेस्ट को में करना है. डू यू रियली नीड इट?
या उससे कोई बेनिफिट, आपको आउटकम जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है. Then you can also suggest sorry we can also talk about कि जी मेरी need इस वक्त ये है that I need to reduce the waste. तो if I'm focusing on waste तो मैं quality पे तो नहीं जाऊँगा ना, I'll be focusing on the wastage. So if I want to focus on the waste, then I use the methodology of lean. So don't focus on the tools. Focus के आपकी need क्या है, उन need के मुताबिक then just use these tools. Because if you are going to use a wrong tool for a wrong needs are not wrong, a wrong tool in the wrong time, आपकी improvement नहीं होगी, rather आपके losses होंगे. And that what I have seen in Pakistan. ठीक है. Number of times organizations में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि जी global trend आ रहा है, ऊपर से order आ गया, तो हमने करना है. Understand your system. Without understanding the system, क्योंकि जब तक आपको अपने system का ही नहीं पता तो आप improvement कैसे लेके आएंगे, ठीक है. Improvement is basically for the tangible जो आपका increase हो रहा है, लोग आपके loyal हो रहे हैं, वो अपने organization के अंदर वैसा culture create करना होता है. और अगर आपकी organization improve नहीं हो रही, for example, there is no need to be happy if you say कि जी my organization is the same for the past 10 years. Then it's wrong. Organization needs क्या, उसको change होना है, उसको improvement लेके आनी है. So final recommendation. Remembers Deming's now first point. अब Deming क्या कहता था? I loved it. Constancy of purpose. And keep on keeping on. कि आपको improvement क्या करना है, लेके आते रहें, ठीक है. So when you are doing this, आपकी improvement अगर business के अंदर है, आपकी improvement अगर organization के अंदर है, so that is a healthy sign. And improvement को measure करने के लिए we have tools, we have approaches, we have models. Use them, and that will actually give you a better result. So ladies and gentlemen, our time ends up over here. We will be moving on to lecture number 24 inshallah next time. Till then, have a wonderful time. Allah Hafiz.